Gyan Sagar Educational Group presents eSchool. Okay, so our next topic is Taylor's principle. See, this principles comes under scientific management, as we have already discussed that the father of scientific management is F.W. Taylor, that is Frederick Winslow Taylor. So what do you mean by scientific management? Scientific management means knowing exactly what you want a man to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. See, I have in the starting sessions I have made you study regarding efficiency and effectiveness. So what efficiency means? Less cost, मोर प्रॉफिट. इफेक्टिवनेस मीन्स एक जो भी समय सीमा दी है आपको, जो भी टाइम दिया है, जो भी लिमिटेड पर्टिकुलर टाइम है, उस टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है. सो इन दिस रिगार्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. See, Taylor pioneered that the introduction of method of scientific inquiry into a management. Science क्या बोलता है कि जैसी प्रिंसिपल है वैसी की वैसी अप्लाई होगी. But in the concept of management, these principles are different according to the situation. So we can say that a manager follows different indigenous methods to solve different problems. मतलब कि वो अपने अपने अकॉर्डिंगली, अपने अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, अपने अपने इफेक्टिवनेस के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके देख सकते हैं. सो रूल ऑफ थंब नहीं है. The point to say is it's not rule of thumb कि जैसा कह दिया तो वैसा ही होगा, नहीं. There are certain scientific methods which are involved in investigation are like the traditional methods through working studies. Working studies क्या होती है? There are certain studies like time study, motion study, method study. These kind of studies are there which we are going to deal it up in the next techniques session. Best practices and best methods. So according to the Taylor, he emphasized that a small production activity also considers some scientific planning. There is a planning in each and every particular method. कोई सी भी एक्टिविटी होती है तो उसमें भी एक पर्टिकुलर मेथड रहेगा ही रहेगा. ठीक है. Then next is harmony not discord. See, in harmony not discord we can see that as Taylor emphasis on factory system, so factory system of production implied that managers should serve as a link between the owners and the workers. तो मैनेजर के बीच में क्या रहता है, मैनेजर जो है वो सबसे बीच में, he is a mediator for owner also and for the workers also. इसलिए बोला गया कि वर्कर्स और मैनेजर के बीच में कंप्लीट हार्मनी होना चाहिए. इसी की वजह से जो टेलर है उन्होंने फोकस किया मेंटल रिवॉल्यूशन पे. मेंटल रिवॉल्यूशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज. सी ही emphasizes that there should be complete harmony between management and workers, but he showed that every particular aspect, yeah, every element, whether it is worker, whether it is manager or whether it is owner, they should be realize the importance of each other. उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें दोनों की या तीनों की एक दूसरे के प्रति जो इंपॉर्टेंस है वो पता रहना चाहिए. ठीक है. Then we can take an example like management should share the gains of company with the workers, and at the same time workers should work hard and be willing to embrace change for the good for the company. So they should work as a part of the family, yeah, they should work as a family. ठीक है. We can also take an example of Japan. Japanese working culture is so classic example for this is in Japanese companies there is a paternalistic style. So in this what they used to do is there is an openness between management and workers. If at all workers go to strike, they wear a black badge but work more than normal conditions. मतलब ये कहना चाह रहा है वो कि उनका जो प्रोटेस्ट करने का जो तरीका है वो भी डिफरेंट है. लाइक वो वर्क करेंगे बट क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर पैटर्न बना के, लाइक उन्होंने हाथ पे काली पट्टी बांध ली जिससे कि सभी वर्कर ने काली पट्टी बांधी, जो ये दर्शा रहा है कि नहीं, they are having certain problems. Next is cooperation not individualism. See, there should be complete cooperation between labor and the management instead of individualism. आप इंडिविजुअल तरीके पे काम नहीं करना है, आपको किसके बेसिस पे काम करना है, आपको वर्किंग कल्चर के लेवल पे काम करना है, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे काम करना है. सो दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. जहां पर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड खत्म होगा वहीं से कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल चालू होगा. अगर आप हार्मनी में है दैट मीन्स यू आर वर्किंग इन कॉपरेशन. So competition should be replaced by cooperation. There should be competition but it should be healthy competition. Competition जो है वो क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, बट कॉपरेशन उसमें छूटना नहीं चाहिए. ठीक है. कॉपरेशन करो आप एक दूसरे के साथ मिलके काम करो, एक टीम के बेसिस पे काम करोगे तो ज्यादा अच्छे से काम होगा.
ठीक है. So for this, management should not close its ears to any constructive suggestions made by employees. This is an example. They should also reward for the suggestions which results in substantial reduction in cost. See, every business focuses on reduction in cost, yeah, lower the cost. So they should be a part of management, and if any important decision has been taken, that suggestion of the worker should also be considered. ठीक है. Then next is development of each and every personnel to his or her greatest efficiency and prosperity. Again a word came, efficiency. See, in industrial efficiency, it depends to a large extent on personal competencies. एक person कितना competent है, एक person कितना trained है, एक person कितना expertise है, इसके ऊपर सारी चीजें based रहती है. So there should be a training, एक successful training program होना चाहिए, which is also can be termed as a best method to impart efficiency and effectiveness in a particular person, in a particular worker. So Taylor was of the view that it concerned efficiency more. It could build a right from the process of employee selection. मतलब जब आपने उस एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया, उसी समय से आपको उस पर्सन की एफिशिएंसी पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि उसको और कितना आपको आगे बढ़ाना है, उसकी एफिशिएंसी को कितना और ज्यादा आपको इम्प्रूव करना है. So each person should be selected scientifically. एक particular, like you know, in many of the corporate world, they used to have 3-tier mechanism for selection. Like पहले वो HR का interview होगा, उसके बाद director का interview होगा, उसके बाद फिर उस company के CEO का interview होगा. So there are certain exams like email कैसे लिखना है. Then you should know about the working etiquettes. You should also know about the eating habits, ड्रेसिंग हैबिट्स. तो ये सब चीजें उसमें सिखाई जाती है, ये सब चीजें उसमें पूछी जाती है, जिससे कि एक पर्टिकुलर पर्सन का एक एनवायरनमेंट पता चल जाता है कि उसको कितना आता है और कितना नहीं आता. सो देन अकॉर्डिंग टू दिस द वर्क इज बीन असाइंड which suits his her physical and mental and intellectual capabilities. To increase this efficiency, they should be given a proper training for this. So training is very must. ट्रेनिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ट्रेनिंग. So hence we finish with this session. Thank you and have a nice day.